So on to question number 20, still sticking with this summer 23, paper 11. So this question says, in an experiment, a student uses a microphone and a CRO to analyze a sound wave. The diagram shows the trace on the screen of the CRO. So as you can see, this is not a full wave which is shown. Some of the part vertically is also missing from the screen. And also you have another wave which is supposed to be shown so that you can accurately calculate the time period. That is also not being shown here. So the student is expecting a sinusoidal waveform to be shown on the screen. So he wants to see at least one full wave on the screen. Which changes should the student make to the time base and the Y gain of the CRO so that the screen shows a continuous trace for one complete cycle of the waveform? So if you remember, then the time period is the horizontal divisions multiplied by the time base, right? And similarly for the Y gain, not the Y gain, we should say the amplitude basically. It's the vertical distance, the vertical number of boxes which correspond to the amplitude. So from the mean position to the peak, multiplied by the Y gain is the amplitude. So the sinusoidal waveform must have some time period, must also have some amplitude. Now in this case, we want the horizontal divisions, basically the horizontal divisions corresponding to one time period, we want it to reduce. So to make this reduced, we must increase the time period. This is very straightforward. And similarly, the amplitude as well, the amplitude is actually this much. So for the amplitude to reduce, well, not the amplitude, actually the vertical divisions to reduce, for the same amplitude, we would have to increase the Y gain. So increase the time base, increase the Y gain, hence option D is the answer. You can also think of it like this, that the time base is basically the time it takes for the wave to travel across the screen, right? If you remember the units, it's like, usually most of the time it's milliseconds per centimeter. So if we increase the time period, that means it's going to take longer to travel across the screen. So then more of the waveform will be observed. And similarly for the Y gain is usually given in volts per centimeter. So if you increase the volts for 1 centimeter, then this wave is also going to get smaller vertically, and again you will see more of the wave. This was a tricky question. Now let's look at the next question. So this one says the graph shows the variation with time of the displacement of a particle in a progressive wave. So this is how the displacement changes with time. In all questions related to graphs, you must first of all look at the axis, because then that will basically decide what can you or what can you not get from the wave. So यहाँ पे हमारे पास displacement है, we have time as well. So हमें पता है that the vertical displacement, the maximum vertical displacement is called the amplitude. So first of all, x, so that must be amplitude. So it's either A or C. And then what about this horizontal distance? So ये horizontal distance क्या है? If you think about it, it's between 2 points in phase. So ये वाला फासला फिर क्या बता रहा होगा? अब क्योंकि this is a time axis, then it's going to be the time period and not the wavelength. If instead of a displacement time graph, अगर ये displacement distance graph होता, so for the distance graph, ये जो wavelength होता है, not the wavelength, this horizontal distance, which would be the distance between two peaks or two troughs, or between the starting and the ending of a wave, वो wavelength होता. But because on the x-axis here we have time, it's going to be the time period. Let's have a look at the next one. So this is question number 23 of the same paper. Question number 22. A car travels at a constant speed along a straight line PQ. A loudspeaker attached to the car emits sound of constant frequency F. A stationary observer is at point O. What does the observer hear as the car moves from P towards Q? Now let's say that this car is moving with some velocity v towards point Q,
एंड वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे ये जो O पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, दिस वुड नॉट बी, इसकी डायरेक्शन में इट्स नॉट मूविंग विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ v, रादर इफ वी रिजॉल्व दिस इनटू कंपोनेंट्स तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है. So let's say that if this is a line and if this is some angle theta, so this is moving with some velocity v cos theta towards point O. ठीक है, देखें शुरू में क्या हो रहा है कि इसकी velocity तो it has some movement towards point O as well. सही है, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई velocity है in this direction. So पहली बात तो ये है कि भाई frequency जो है that would be more than f. सही है, बिकॉज इट्स मूविंग टूवर्ड्स दिस बाय द डॉपलर इफेक्ट. ये अगर इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हेयर करेगा. तो पहली बात तो सही है कि फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एफ, सो इट हैज़ टू बी ईदर सी और डी. कैन नॉट बी ए, कैन नॉट बी बी. लेकिन अब इस फ्रीक्वेंसी को क्या होगा जैसे ये मूव कर रहा होगा. सो नाउ फॉर दिस केस लेट्स टेक अनदर सॉर्ट ऑफ ए मूवमेंट यहाँ पे, जब ये एक ऐसी पोजिशन पे है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, अगेन इसकी वेलोसिटी जो है इट्स कांस्टेंट, सो इट्स गोइंग टू बी द सेम. और अगर ये कोई एंगल है, लेट्स कॉल दिस थीटा 2, सो यहाँ पे अगर हम v cos थीटा की बात करें, सो इट वुड ऑब्वियसली बी v cos थीटा 2. लेकिन आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है कि थीटा 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन थीटा 1. तो यहाँ पे जो इसका ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, अगर आप याद करें cos फॉर acute angles, so between 0 and 90, अगर आपका एंगल बड़ा होता है तो cos की वैल्यू छोटी हो जाती है. So then cos theta 2 would actually be less than cos theta 1. सही है, cos of 0 is 1, cos of 90 is 0. तो अगर आपका एंगल बड़ा हो रहा है, cos की वैल्यू छोटी होगी. So if we think about v cos theta now, तो v cos theta कम हो रहा है. ठीक है, so if we also write out the Doppler effect equation. So f observed is fs v over v plus or minus vs, but यहाँ पे क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है, distance between them is reducing, तो हम vs लेंगे. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे frequencies की ज़्यादा तो है, बट दिस relative frequency of approach जो है, ये जहाँ जिस तरीके से O की तरफ आ रहा है, जो v cos थीटा जिसकी अभी हमने बात की है, v cos थीटा इज गोइंग टू रिड्यूस. सही है, सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस. जाहिर सी बात है, ये रिड्यूस होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी. अभी भी f से ज़्यादा है, बट इट्स गोइंग टू डिक्रीज विथ साइज. ये काफ़ी टेक्निकल सवाल था. सो द आंसर फॉर दिस वन इज C. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. 23. Some sources of electromagnetic waves in free space are listed. You have a radio wave transmitter, you have X-rays, and then you have 30 mm wavelength ka radar transmitter, and then you have an LED which emits red light. Which list gives the visible sources in order of increasing wavelength from left to right of the waves emitted by the sources. ठीक है, तो भाई देखें हमें पता है रेड लाइट का वेवलेंथ अंदाजन वी मस्ट नो कि ये कितना है. सो इन नैनोमीटर्स 400 to 700 नैनोमीटर्स होता है द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. रेड इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये हो गया 700 नैनोमीटर्स. देन यू हैव 30 mm, ये भी आपको दिया हुआ है. ठीक है जी, एक्स रेज भी हैं आपके पास. सो फॉर द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका एक बहुत आसान तरीका है हाउ यू कैन मेजर द वेवलेंथ्स इफ यू रिमेंबर वन कांस्टेंट स्टेप साइज. बेसिकली कहने का मतलब कि अगर हम रेडियो वेव से स्टार्ट करें, आप कह दें कि भाई इसका जो वेवलेंथ है दिस इज 10 to the 2 meters. ऑल्सो जस्ट अ साइड नोट, बी कॉशियस एंड बी स्मार्ट. अगर आपको सिर्फ वेवलेंथ्स के ऑर्डर्स याद है देन यू कैन ऑब्वियसली ऑल्सो गेट फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर्स. दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन आफ्टर दिस यू टेक स्टेप्स ऑफ 3. सही है, सो 10 to the 2 के बाद अगर आप माइक्रो पे जाएं दैट्स 10 to the -1. इसके बाद आप जाएं इंफ्रारेड पे, दिस इज 10 to the -4 अप्रॉक्सीमेटली. अगेन ये बॉल पार्क फिगर्स हैं, वैसे इसकी रेंजेस होती हैं, बट दिस इज गुड इनफ.
फिर आपके पास आता है विजिबल लाइट, जैसा ऊपर जो लिखा हुआ है ये नैनोमीटर्स है, बट दिस इज हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स, सो अंदाजन ये -7 है। विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट इज द ओनली वन वेयर यू हैव नॉट अ डिफरेंस ऑफ 3, यू हैव अ डिफरेंस ऑफ 1, तो ये 10 टू द -8 हो जाएगा। और इसके बाद अगेन यू कैन यूज द स्टेप्स ऑफ 3। सो इसके बाद जब आप एक्सरेज आएंगे फिर से ये आप और 3 से कम कर दें, -11, और फिर आप आ जाएं इस पे द लास्ट वन विच इज गैमा, so that's 10 to the -14 अंदाजन, and this works very well. So यहाँ पे जो आपके पास सोर्स ऑफ एक्स रेज है इसका ऑर्डर इज 10 to the -11, बाकी सबको भी ऑर्डर्स ऑफ वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। 30 into 10 to the -3 will basically be 10 to the -2, 700 into 10 to the -9 will again be 10 to the -7, और रेडियो वेव्स जो है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू दी 2 मीटर्स। सो इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात आ गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इज ऑब्वियसली इट्स इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सो द लेफ्ट मोस्ट मस्ट बी दी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। वो कौन सी है? एक्स रेज, सो 2, और सबसे बड़ी वाली इज 1। दिस इज हाउ यू वर्क स्मार्ट विद MCQs। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन। एक दो और सवाल देखते हैं। Polarization. A vertically polarized beam of light is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle of 40 degrees to the horizontal. Before even going further with the question, and let's go a bit further और diagram को देख लेते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ कोई एंगल मार्क हुआ है, so definitely this is something which will cause you to use Malus's law. So I equals to I naught cos square थीटा। इस चीज़ के बारे में बहुत होशियार रहिएगा, दिस इज लिटरली द ओनली ट्रिकी टर्म इन दिस एंटायर इक्वेशन। ये जो थीटा है इसके बारे में आपने ये जानना है कि जो थीटा होता है दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइट एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस। सही, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे ये आपके पास कौन सी लाइट आ रही है? वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, और ये एंगल किसके साथ है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। सो इट्स नॉट रियली द एंगल दैट वी वांट। अगर आपके पास लाइट वर्टिकली आ रही है तो देन वी वांट दिस एंगल, और अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा इसका मतलब है 90 - 40, दिस वन विल बी 50 डिग्रीज। ठीक है। बाद में पूछता है रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड बीम टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम। तो यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा से इंटेंसिटीज का रेशो तो निकाल सकते हैं। सही है। ट्रांसमिटेड वो है जो निकल रही है इससे, सो दैट्स I, और इंसिडेंट कौन सी थी? I नॉट। सो दिस विल बेसिकली बी cos स्क्वायर ऑफ 50। आई होप कोई भी कैलकुलेटर के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, पहले स्क्वायर लगा के फिर 50 करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज व्हाट दिस मीन्स इज cos 50 का स्क्वायर। तो ये आपके पास अंदाजन आएगा 0.41, लेकिन आपको चाहिए एम्पलीट्यूड्स का रेशो। सो देन यू मस्ट यूज हियर दिस रिलेशनशिप के इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो इफ यू वांट द रेशियोज ऑफ द एम्पलीट्यूड्स तो फिर आपने बाय दिस रिलेशनशिप इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.41 का अंदाजन 0.64 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। सो ऑलवेज रिमेंबर इन मैलस लॉ कि ये जो एंगल होता है, ये जो भी आपके पास लाइट जिस तरीके से पोलराइज होकर आ रही है, इट्स बिटवीन दैट लाइट एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25. Two progressive waves meet at a point. Which condition must be met for superposition to occur? So superposition क्या कहता है भाई? क्या superposition में कोई conditions होती हैं? क्या superposition कहता है कि wave coherent होनी चाहिए? No. This is the condition for the production of maxima and minima. Basically interference pattern के लिए ये चाहिए होता है, superposition के लिए नहीं चाहिए होता है. Must they be traveling in opposite directions? No. This is a condition for the creation of stationary waves. Must they meet in phase? No. ये constructive interference के लिए होता है. सिर्फ इसकी एक ही शर्त है, वो ये है कि waves का type same होना चाहिए. तो या sound wave हो, microwave हो, ताकि आपके पास basically they interact in some way. Different types of waves would not interact.